Hey guys, welcome back to my channel Tithi Love. Hey guys, welcome back to my channel Tithi Love. আশা করি তোমরা সব ভালো আছো আর আমি খুব ভালো আছি। তো চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটা অনেক দিন ধরে বাট ভিডিও দিচ্ছি না, তো একটু প্রবলেম ছিল। তো গাইজ এখন আমি চলে এসেছি। তো এইখানে এসেছি আমি চুল কাটতে। তো দেখো এখানে আমার চুলটা বড় হয়ে গেছিলো আর এইখানে না প্রচণ্ড পরিমাণে চুল উঠছিল। তো এই ব্যাঙ্গালোর হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে চুল উঠছিল, তো এই জন্য ভাবলাম যে চুলটা কেটেই ফেলি। আর এখানে পার্লারটা অনেক দূর আছে, যেহেতু অনেক দূর বলতে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগে লেডিস পার্লার। আর এখন তো পুজো এসে গেছে, বাট এখন পুজোতে তো বাড়িতে নেই, পুজোতে এবার বাড়িতে যেতে পারলাম না, এখানেই রয়েছি। তো মনটা অবশ্য ভালো নেই, তো এই জন্য কোনো কেনাকাটা কিচ্ছু কিনিনি, কিচ্ছু করিনি। চুলটা প্রচণ্ড পরিমাণে পড়ছিল, মানে কি বলবো, অনেকটা পরিমাণে উঠছিল। ম্যা ফার্ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಅದ್ ಯಾರು ಎತ್ಕೊಂಡೋದ್ರು? ಹಾ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೈತೆ ನೋಡು, ಮೋಟ್ರ್ ಹತ್ರನೇ ಐತೆ ನೋಡು. ನೀನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಕ. ಏನು ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆಗಡೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಮ್ಮ? ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು 5 days. ನಿಂಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಉದುರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹರಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಉದ್ರ ಕೂದಲಿಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಲ್ಲ. ಹರಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಉದ್ರ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತೈತಮ್ಮ. ದಿವ್ಯಾ ಗುಂಡೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಪಾಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫೈಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. 12 ಗಂಟೆ, 11, 12 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಅದೆತ್ಕೋ ಇದೆತ್ಕೋ, ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇಶ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾಷ್ಟ ಕಲ್ಕೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀನಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಹಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ದಿರಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳ್ದಿರಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟವಲ್ಲು, ಸಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರವರು. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೂ ಅದೊಂಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಎದುರು ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲನಾ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರೋಯ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕ ಹತ್ರನ ರೂಪಕ್ಕ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ 2,500 ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೆದ್ರನ್ನ ಅದೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ರೂಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದು ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಗಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ. ನೋ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ ಬಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಅಲ್ಲ ಹಾಕ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನೀನ್ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಇಂಥದ್ದ ಅಂಥದ್ದ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಟೀ ಶರ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ತೋರ್ಸೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಮ್ಮಯ್ಯ. ಹಾಂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಏನಾರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಎದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು. ಈ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಷ್ಟದೇನು ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ তো গাইজ আমার এখন দেখো চুল আমি কেটে ফেলেছি। তো চুলটা ছোটোই করে ফেলেছি, কারণ হচ্ছে এইখানে না জলটা প্রচণ্ড খারাপ আর প্রচণ্ড পরিমাণে চুল উঠছিল। আর এমনিতে দেখো আমার চুলটা এমনিতেই অনেকটা পাতলা, তো চুল মানে পরিমাণে চুল অবশ্য আমার ওঠে না, আমার ছোটোবেলার থেকে এরকম মানে আমার চুল। তো এইখানে মানে এসে না প্রচণ্ড পরিমাণে চুল উঠছিল। তারপরে ভাবলাম যে যদি চুল উঠতে উঠতে পুরোটা উঠেই যায় তাহলে কি করব, এই জন্য ভাবলাম তো চলো চুলটা তাহলে কেটেই ফেলি। অনেকটা কেটে ফেলেছি, কারণ চুলটা ছোটো থাকলে বেশি উঠবে না, আর বেশি অনেকটাই বড় হয়ে গেছিলো। তোমরা তো দেখেছো আমার আগের ভিডিওতে আমার চুলটা কত বড় ছিল। তো কেটেই ফেললাম। তো যদি না কাটি তাহলে চুল তো পুরো মাথা থেকে পুরো উঠেই যাবে। তো এই জন্য ভাবলাম চলো চুল কেটে ফেলি। মানে আমরা যে রুমে থাকি তার সামনেই মানে ওই আন্টিটার ঘর, ওইখানে ওনার বাড়ি। তো এখানে এসে চুলগুলো কেটে ফেললাম। আর পার্লার এখান থেকে না হলেও মানে সিটিতে তো 2-3 ঘন্টা লাগে যেতে, মানে লেডিস পার্লারে। আর এখানে সব জেন্টস পার্লার অবশ্য আছে। তো এই জন্য এখান থেকে কাটিং করলাম, ইউ কাট দিয়েছি। তো তোমরা তো দেখেছো পুরো প্রথম থেকে, যদি লাস্ট অব্দি ভিডিওটা দেখতে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে যে ইউ কাট দিয়েছি চুলে। তো আর আজকে তোমরা সবাই জানো আজকে হচ্ছে পঞ্চমী, তো পুজো শুরু হয়ে গেছে। আর সত্যি কথা বলতে আমরা এখন বাড়িতে নেই, এখন আছি ব্যাঙ্গালোর। আর এবার পুজোতে যেতেও পারলাম না, যেহেতু প্রথম বছরের পুজোটা যেতে পারলাম না, কিছু প্রবলেমের জন্য যেতে পারিনি। আর অনেক দিন ধরে ভিডিও ভাবছিলাম ভিডিও দেওয়া হচ্ছিলো না, শরীরটা এমনিতে খুব খারাপ ছিল। আর হচ্ছে আমার শ্বশুর মশাইয়ের শরীরটা খুব খারাপ ছিল, এই হসপিটাল এখানে ওখানে যেতে যেতে
ভিডিও করার টাইমই পাচ্ছিলাম না, আর ভিডিও মেন করছিলাম না। তো ভাবলাম চলো আজকে যখন চুল কাটতে যাচ্ছিলাম তো তো আজকে একটা ভিডিও করি। তো অনেক দিন ধরে মানে বড় ব্লগ দেওয়া হচ্ছিলো না, এই জন্য আজকে করলাম। আর এই কদিন কাটিনি অবশ্য, মানে খুব শরীরে খুব যাচ্ছিলো এই হসপিটালে। শ্বশুরমশাই তোমাদের বললাম যে শ্বশুরমশাই শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ ছিল, তো হসপিটালে ভর্তি ছিল। এই কদিন ওইখানে দৌড়োদৌড়ি করেছিলাম, তো এর জন্য টাইম পাইনি চুল কাটা। তো ভাবলাম চলো আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার, তো আজকে চুল কেটে আসি। তো কালকেও এক জায়গায় যেতে হবে, তো কালকে ঘরেতে থাকতে পারবো না, তো এরপর টাইম পাবো না। আর পুজো যেহেতু, আর এইখানে পুজো বলতে বাঙালিদের পুজো অবশ্য হয় না যেরকম আমাদের গ্রামে কত সুন্দর প্যান্ডেল, নাচ গান, একটা ব্যাপারই আলাদা থাকে, খাওয়া দাওয়া। তো এইখানে সব জানো তো কানাডারা, তো আমরা যেখানে থাকি কানাডারা থাকে, এখানে পুজো হয় না। তো পুজো হতে গেলে এখান থেকে টাউনে যেতে হয়, তো না হলেও 2-3 ঘন্টা অবশ্য লাগে টাউনে, আর ওইখানে যেতে হয়। তো পুজোর কেনাকাটাও করিনি, শ্বশুরমশাই প্রচণ্ড শরীর খারাপ ছিল, এই জন্য পুজোর কেনাকাটাও কিছু করিনি। আর মেন বাড়ি যখন যেতে পারলাম না, তো পুজোর কেনাকাটা করে কি করব, বাড়িতে থাকলে একদিন পুজোর কেনাকাটা হয়ে যেত। তো চলো, তো এখন আর কথা না, তো আমরা এখন রুমের দিকে যাব। তো সবাইকে পুজোর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল, সবাই পুজো এনজয় করো। আর আমার ভাগ্যে নেই এই বছর, প্রথম বছর বিয়ে হলো, তো প্রথম বছরই বিয়েতে পুজো থাকতে পারলাম না। তো চলো, কোনো ব্যাপার না, কিছুই করার জন্য করতে হয়, পরের বছর বাড়ি থেকে দেখবো। তো চলো ভিডিওটা তুমি দেখো। ঠিক আছে, তো এখন চলে যাচ্ছি ঘরে যাব। পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা, আরও এই তিন ধরা দিয়ে সিঁড়িতে নামতে নামতে তো আরও ব্যথা এগুলো পা। তো এখন ঘরের দিকে যাচ্ছি, তো এখন ঘরের দিকে যাচ্ছি, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। তো দেখো কতটা ছোট করে ফেলছি চুল। চুল আমার যতই ছোট, মানে যতটাই ছোট করি না কেন, তো আবার দেখি সেই চুল বড় হয়ে যাচ্ছে, মানে প্রচণ্ড পরিমাণে আমার চুল মানে বলে অনেকটা বড় হয়ে যায়। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো চলো, তোমরা সবাই ভালো থেকো, দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। তো সবাইকে পুজোর জন্য শুভেচ্ছা রইল, সবাই পুজো আনন্দ করো। তো সবাই পুজোতে আনন্দ করো, ঘোরো, এনজয় করো। তো চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো।